हाँ वो लाइट अबे अभी चाहते वाले तो अच्छा वो अभी वाले का है सुन पे चल तेरे चार में पानी में 424 ही ना खिलाए एक छोटा टेस्ट 8 मिनट ही है अबे मोबाइल में रोशनी सीरियसली ये जो मॉम दिख गया मैं रुकी इसकी वीडियो निकालने और नहीं दे सकता क्यों क्या मेरे पास क्या चॉइस में ब्रदर और मार दूंगी मुझसे पहले तू मार खा लेगी बोल मत ठीक है उसको तो मार नहीं सकते सोसाइटी को नहीं चाहते तेरे को मार सकती है मतलब उसको तो नहीं मार सकती स्कूल और सोसाइटी में उसको मारने को मैटर हो जाए वो और उसके ऑटिस्टिक दोस्त आ गए तो एक आदमी दो करता रहता है उसको एक्टिविटीज लग रहा है वही लड़कियों से देख के बेहोश हो जाती है उसकी सोच खराब है मुझे मुकुंद जब सेकंड या थर्ड में होगा आद्या करके लड़की मैंने बताया ना वो उसके साथ बैठी थी वेदांत गडकरी के साथ बैठी थी पर उस वेदांत गडकरी नहीं किसके साथ पढ़ाई कोई और था वेदांत क्लास में थी आई डोंट रिमेंबर उसने पूरा थर्ड या फोर्थ थर्ड में अगर वो वेदांत गडकरी की क्लास में थी तो मेरी भी क्लास में हाँ वेदांत गडकरी की क्लास थर्ड में हाँ तो मेरी क्लास में वो तू मैं वेदांत की क्लास वो देखो जानती है ठीक है अंडरस्टैंड इसे वो देख अंडरस्टैंड तो उसको मुकुंद के साथ बिठाया था पूरा एक हफ्ता बेचारी मर गई नहीं तो वो हमारी क्लास में नहीं थी थर्ड में मुकुंद मेरी क्लास में नहीं था मुकुंद मेरी क्लास में आया 9th तो वेदांत उसके क्लास में भी वेदांत बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल अटकरी यही वाला पीछे वाला हाँ पीछे वाला अरे उसने अपना क्लास का भेजा था वेदांत को कि भूल गई थी वो वेदांत को था भी मेरी क्लास में तो उसने बोला मैं तेरे क्लास में स्ट्रगल करके हुए दिखाई कि ये मेरी फोर्थ में होगा क्योंकि फोर्थ में वेदांत मेरी क्लास में वेदांत के कितने कॉन्टैक्ट्स है उसका वेदांत छपरे छोड़ वही ना वही उसको मेरी बहुत सारी चीजें साथ वेदांत लिटरली वॉन्ट्स टू है दो साल छोटी बच्चियां नॉट नाइस पर्सन टू बी अराउंड उसकी एग्जिस्टिंग नथिंग पर्सन शेप किया हुआ है अगर थी ना हां आई के साथ दूसरा छोड़ है कुछ शर्म नहीं है पापा मेरे साथ नया हमको 97 टच हो गया मेरे पापा बोले तो सैमसंग का नया it's not nice just don't get it take my bet don't get an apple मिस कर दिया मैं मिस कर दिया अरे वो बहुत मतलब लाइट आती है उस फ्लैश का आवाज अरे मतलब बढ़िया इसके मार्केट्स में लोग भी फोन छोड़ते हैं वो तुम दोनों लोग लॉगिन किया और मैंने लॉगिन करा उसने लॉग किया था मेरा भाई इसलिए पागल है कितने साल के बता एक बार 5 साल थैंक यू आपको बस वो सेम मॉडल ऐसे पंखे भी मुझे मतलब इनको नींद नहीं आती है समझ नहीं आती है डायरेक्ट जो एक्टिव में वैसे वैसे लाता है तो क्योंकि मुझे मेरे भाई की सीरीज याद आ रही है मेरे को स्पाइडरमैन वाला बहुत अच्छा है दैट्स हां इधर शॉप का
टाइटलाइंस कोई अभी कल दर्ज बात है मैंने स्टोरी पे डाला था वीडियो भी डाला ना काम पे डाला हाँ जी मेरा वो चेहरा है तो एक्चुअली टीचर ने अरे पता है पटवाई तो मार्केट वाली पब्लिकेशन अवेंजर्स का रूल ग्रुप का स्टॉक पर तुझे बताया ना अनफॉर्चुनेटली आई थॉट सो वेरी अदिति अरे अंजलि अदिति ये आप कैसे दिख रहा है कौन अदिति के बारे में पता अदिति अभी वो राइट ना ये हाँ नहीं उसको ऐसे लड़का छोड़ दिया इसको मैंने अरे ऊपर में ये नहीं दे दे अभी लेकिन उसको स्कूल में से बहुत ही देता चॉकलेट हो गया पहले भी था बड़े में से गांधी जी ए भाई नाइन तो बहुत अच्छा कदम पे करेंगे मैं एक चीज स्किल्स भी अच्छे लगते हैं बहुत कम वो इंसान खुद का थोड़ा सा वही करते हैं मतलब गणपति आज भी होती है ना तो वो एक कार्ड से भी बना दूंगा तो लाइक बाहर की स्टोरी कैसी थी मैंने दीदी लाइक जिसका जो बाहर का है ना बालकनी उस पे जुड़े थे एलियन कैप्चर उत्तर बीच में यहाँ पे हमने जस्ट ये गाना क्लिक हो गया चलो यहाँ पे हमारा आर्ट दे रहा है हमारा नहीं दे रहा स्टार्टिंग में बॉय भाई बड़ा कर कुछ स्पेशल हार्ड हो जाता है ले रहा है वह कंपल्सरी है बोला डिग्री भी आगे लोग चाहिए मेरा नहीं है हम है ना करते Good evening. Sorry for the please sit. Sorry, I had just attended one small seminar that all are there? Attendance sign, just give to me. Take out the books. Geography only, na? Minerals and energy. Did I complete with that? no we were on call Okay. What was the details of the course I had given? yes we have done all the quality titles for sure Okay. Coal. Next is manganese. Am I correct? Manganese only. Coal. Did we finish all that? Huh? call completed same as a page number Tell me, what was that last notes that I given? yes Issue was there on that day. Yes. Okay. Then write coal reserves in India. You write coal reserves in India. Based on its origin. Based on its origin. There are so many benches waiting. Why you come from? You are jam. And I don't want this last benches to be occupied. Acha, come from. Good. Wait, लेट आया. साइन करा तो तब वो निकल. वो निकाल. वो बस Based on the what did I say? Origin of the code. It is sitting in front of sir सब topic का it is broadly classified into GCD. It is broadly classified into GCD. Oh, GCF. Sorry, and TCF. So write the full form of GCF. Then and there only same line. Gondwana coal field. It is Gondwana. Gondwana coal field. That's how you write tertiary coal field. Tertiary coal field.
This is 200 million years old. And this is only 55 million years old. I don't want to listen any talking once I start. You talk, I will stop. Copy down to these two. Here sign, here sign. Why this bunch of girls are not coming? Here and dear friends. Okay. Thank you. Right. More than, next line, more than 98% of coal, 98 या 95 है, बाद में check कर लेना, is under GCF type, under GCF type. More than 98% is under which side? GCF, whereas the rest, how much percent? 2% is TCF. Is TCF. Full stop. Next point. There are four main types of coal. Four main types of ores of coal. Also. Four main types of coal, which are, any idea, guys? Ores. Okay, what is the difference between an ore and a mineral? Any idea? Ores मतलब bracket में लिखना raw form. Sorry. Raw form of any mineral is called as ore. Okay, so we have this neatly given in the volume, so but then also I'll just mention it. First one we can write anthracite. Second one is bituminous. Third one is lignite. And fourth one is peat. Guys, please don't talk, so that we can explain and go ahead quickly. I'll try to give you writing less, but important and make it. You're giving subpoints for each of the No, following. it's all there. Only that, only. So you write more than 80% of carbon. C is for carbon. Huh? Next you write 60 to 80%. The rest we are going to mark there. Understand there. We did that already. I did that already. Yeah. Okay, then it will be. ठीक है. How can you manage? Can't manage a textbook. Hey guys, no nothing. And the last one is 60%. Copy down this. Marking is done, distribution is also done. Okay. Then I'll take you directly to petroleum. You said we were going to start with that. Today. Okay. We have done this small books. Okay. Now put the next heading, petroleum. Or minerals.
is called as mineral oil. Write down few lines. I'll explain. Then we accordingly go. Second important conventional source. Second important conventional source next to coal. Next to coal. Second important conventional source next to coal. Full stop. Mainly use as fuel. You understand fuel, na? F-U-E-L. For bulk of transport. And also used for lighting. Also used for lighting. Lighting. I'll explain. Come on. Lubricants for machines. Lubricants for machine. Bracket में डाल दो engine oil. If you might have heard about, right? Engine oil. Lubricants for machine. Inside the bracket you can write engine oil. As well as a basic raw material. Basic raw material for majority of basic raw material for majority of industries. And the last line, then you can relaxedly listen what I'm going to explain. Hence, petroleum refineries. Petroleum refineries are referred as, and this I will explain also, petroleum refineries are referred as what is it? Nodal industry. Nodal industry. You can write what does that nodal industry means. है ना? ऐसे ही लिखो. Sentence में लिखो. It's not dull, right? N-O-D-A-L. L is missing. A, you write synthetic textiles. Synthetic का मतलब क्या है? Man made. Synthetic textile, naturally. Next, fertilizer industries. Next, chemical industries. Bulk of transport. Bulk के लिखना the whole of transport. Bulk of you can stop. Petroleum everyone knows. Is it a fossil fuel? Fossil fuel? No. Not a fossil fuel. Why? How petroleum is formed? Actually, we call it as crude oil, or I've written mineral oil. It's not a fossil fuel. It's a fossil fuel, but it is refined. धरती के अंदर से कौन रिफाइन करता है? Crude oil is not refined, petroleum is the refined version. Okay. Now you decide upon, is petroleum fossil fuel? Yes or no? Yes.
yes. Part of It is possible, मत बोल बीच में. देखो, where you are saying yes or no because you don't know what is a fossil fuel means, correct है? Fossil fuel वो होता है जो dead, decayed of plants, materials or animals like which are buried deep in and then due to decomposition, dark color, semi-solid, it is not semi-liquid. If you have seen, it's like if you dip your finger, it will come back as a like a semi-solid only. There we do the extraction. It is heated at highest degree called 570 degrees centigrade, and 3 primary, secondary, and tertiary liquids get collected. The lighter most liquid at the top, tertiary, and the denser most is at the primary. Denser most, if I say, हम लोग जो हिंदी में डांबर बोलते हैं, डांबर देखा है जो रोड में डालते हैं ना, अरे ब्लैक कलर रोड है, एस्फॉल्ट, उसको हम लोग बिटुमिन बोलते हैं इधर, बिटुमिन. एंड द लाइटर मोस्ट इज जो इंडिया में नहीं मिलता है और हम लोग कार में यूज नहीं करते हैं, अमेरिकन्स ओनली यूज इट, व्हिच इज कॉल्ड एज गैसोलीन. फिर पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, lubricants, paraffin wax, petrochemical products, etc. etc. So such important is it India having huge deposits of mineral oil? No. No, India does sure. not have. Then what are we doing for our petrol, diesel? Where it is? Import from Which is the single most source which is big in India? In India. Jar. Mm-hmm. Correct. It is Mumbai High. If you have gone to the Gate of India, from there you can see a big oil rig around 124 kilometers or 140. It is a company called ONGC. Full form? Oil and Natural Gas Corporation. India का hardly 32% requirement वो लेता है. बट अगर मैं पूरा इंडिया का बात करूं, इट इज क्लोज टू 68 और 70% पूरा इंडिया में. बट देन वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, है ना, एंड अमेरिका. अभी रिसेंटली इन बिटवीन द वॉर रशिया गिव अस द चीपर मोस्ट, तो इंडिया ने बल्क में खरीदा, रिफाइन किया. 6 महीने के लिए इंडिया वाज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड. सऊदी को भी पीछे छोड़ दिया, तो सऊदी वाज शॉक्ड. यू नो व्हाट इज सऊदी? What is Saudi? Saudi Arabia. But full form क्या? Correct. KSA, Kingdom of Saudi Arabia. We Indians pronounce it Saudi. Is American Saudi बोलता है ना? Saudi Arabia. Saudi. And that is the only country which is giving a big fight to American, not exactly America. Have you heard about Mexico? Either it is found deep inside the ocean, or it is found deep inside the sedimentary or some porous rocks. And deep inside the ocean, how it is the rocks, sedimentary. And there is a plant-like animal. What is that? Which looks like plant, but it is animal. Corals. Their speciality, they take birth in millions, they die in millions. अब बोलेगा इसमें क्या speciality है? But their lifespan is hardly for 2 weeks. तो सोचो 2 हफ्ते में every 2 weeks they are dying, settling. And then the biggest mammal called a blue whale. How does a blue whale die? Somebody told me heart attack है sir. उसने oil बहुत खाया, old age problem. उसने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा और मालूम पड़ा इंडिया हार गया, हार्ट अटैक हुआ. The last day of his or her, we do not know. Very few whales are left. It takes the single most leap and it tries to push its body to the max and then done. So it goes deep the ocean. एक ब्लू व्हेल का पूरा डिकम्पोजिशन होने के लिए मिनिमम 2 साल लगता है. तो सोचो सच अ ह्यूज वन, बोन्स के साथ 2 साल, कभी कभी तो 3 साल. So that will also settle. Okay, why I am giving this story? Because very discovery facts you may not be knowing. So there might be ages. Oil and water do not mix, na? Then how petroleum is found deep inside the water? Oil आप लोग ने वो separation of water and but decomposition तो oily है ना, ऊपर आ जाना चाहिए ना.
वो कैसे नीचे ही रहता है? हाँ वेरी गुड. कौन सा क्रस्ट है उधर? देखो I said sedimentary rocks, layer by layer, है ना? They are trapped, and when these drillers go, scuba divers, they have to drill deep inside the ocean. Most dangerous job. Even one mistake, done, and they are already 150 feet, 200 feet deep beneath the ocean. फिर वो drilling machine पे चलता है. सोचो, you know what is a drilling machine ना? देखा है रोड साइड में? और normal drill machine, how does it throws? अभी तो एक साइलेंट वाला आ गया, देखा है? इधर अपना सानपड़ा पंपिच में मैंने देखा ऐसा लंबा सा मशीन है which takes the roller like thing, है ना? वो रोड को करता है और वो डिपॉजिट भी खुद ही कर लेता है. ये अपना जो फ्लाईओवर है ना उसके ऊपर वो चला नहीं एंड दूसरा लॉरी फिर वो लेयर डालते ही जाता है. So you understand same thing happens beneath the ocean, and what is formed? Crude oil. Why crude oil is so important? After the first lecture. So we always believe crude oil is very important. India is the biggest market for every country. का अगर एग्रीमेंट साइन हो गया दे विल माला माल हो गया. क्यों माला माल हो गया? हार्डली इंडिया के पास 32% है, बाकी कितना परसेंट वो बाहर से इंपोर्ट करेगा? 68%. एंड एक महीने में टन्स एंड टन्स ऑफ ऑयल इंडिया इंपोर्ट. एंड इंडिया एक महीने के लिए थोड़ी एग्रीमेंट साइन करेगा. इट विल साइन फॉर नेक्स्ट 2 years, maybe 3 years, sometimes 5 years. We have a oil and gas pipeline coming all the way from Iran, under the ocean आता है, फिर इंडिया में आता है. So look, what is this business? What is this business? Very rich business. Now you can understand why the Arabs, Arabs, they sit in that morning activity. That is also made out of gold. शायद ये न्यूज़ प्योर गोल्ड का बनाता है उनको, क्योंकि पैसा उनको इतना मिलता है. शायद अरविंद केजरीवाल को ये न्यूज़ नहीं मिला, है ना? Now he is forcefully, I think, left out of that palace. What is that lady? Who is Marlena? Marlena, no? It's Mahali. No, Marlena only. She is the new CM for Delhi. Her father and mother is a university professor. They are influenced by the communist ideology. आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है? हैं? लेनिन पढ़ा है? तो ये लड़की का नाम कार्ल मार्क्स का मार्क्स आधा, लेनिन का नाम आधा, वैसा उसका नाम मार्लिना. हाँ, their parents are big fan of that two leaders. I hope whether you know that parliament attack in India was done by a professor of University of Delhi only, and that person was working directly under these two, mother and father. जब ये CM बनी, तो they were showing all the details. She's a very learned lady, but cartoon जैसा दिखती है और dark है ना. केजरीवाल बोला हाँ ठीक है, पहले बदन को संभाल. मेरा भैया बोला भैया अंदर है, अभी बाहर है. And she is very learned, and I feel at least certificately respect करो, but the way she speaks and protects Mr. है ना केजरीवाल या केजरीवाल, I don't understand him. Something I don't believe at all. But then these two teachers, mother and father, has protected that fellow. और बोला कि प्रेसिडेंट तक लेटर लिखा होगा, you have that grant of pardon or reprieve. सिर्फ प्रेसिडेंट मौत का सजा बंद कर सकते हैं. तो लोग ने बहुत बड़ा हंगामा किया, बोला उसका फांसी का सजा बंद करो, वो प्रोफेसर है, ऐसा है वैसा है. एंड फांसी का सजा के लोग ने क्या नाम दिया? जुडिशियल किलिंग. बहुत बड़ा हंगामा किया. was not here, I was somewhere out working. हाँ, एंड दे से जुडिशियल किलिंग हो रहा है. हाय चलाया. अभी उसी की बेटी सीएम. What mentality she will be? कार्ल मार्क्स का और लेनिन का मिक्सचर लेकर आई. फिर भी उसको केजरीवाल ज्यादा पसंद, पता नहीं what. So I am diving away from this. This Delhi is going through serious, transformation. But I think Maharashtra is also going to face elections. You know that, na? In the next 6 months we'll have. And एक वो LM क्या है वो? One nation, one election. वो भी पास ऑलमोस्ट कर देगा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी. मतलब पूरा इंडिया में एक ही दिन में इलेक्शन रहेगा, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी और पंचायत का. तो आई थिंक दे से मिनिमम मनी इंडिया कैन सेव इज 12 लाख crores. हाँ, इलेक्शन के लिए खर्चा होता है ना, ऐसे ही थोड़ी पूरा साल भर तो हमारे इंडिया में इलेक्शन ही चलता है. अभी किधर है? दिल्ली का.
अभी किधर है? हरियाणा, अभी किधर है? पंजाब का। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब इंडिया का ही पैसा है, इंडिया का किधर पैसा? हमारा पैसा है, टैक्स का मनी। एंड बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप में बहुत सारा कंट्रीज ये फॉर्मूला में ही चलता है। बट इनको लगता है कि मोदी का ये मास्टर प्लान है, और जो भी प्लान होने दो, बट वी आर सेविंग ए ह्यूज मनी। एनीबॉडी नोस हाउ मेनी zeros will come? 12 lakh crores। सर करोड़ का ही कितना जीरो है मालूम नहीं, सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए, and that is also just for one day election. So look how beautifully India is going for a change. I think by the time you are 18, 19, you should also be voting. And I think definitely आप voting एक ही दिन में election होगा पूरा इंडिया में, and पूरा इंडिया में एक ही नहीं ना, एक ही बोथ में 2 डिब्बा रहेगा। ये आपके लोकसभा का डिब्बा है, ये आपके विधानसभा का डिब्बा है। बात कर दो हाँ, एक ही। So we always believe, देखो, when I say petroleum, every petroleum producing country want to get an agreement with India. Why? एक बार agreement sign कर लिया, उनका अगले 15 साल का कमाई इंडिया से मिल जाता है, 15 साल का। That much of oil India is buying. Now this EV has entered the market, but फिर भी इंडिया का डिमांड उतना ही है ना? ऐसा नहीं कि everyone is having an EV. Understood? So I had explained why this is called as a which industry? Nodal. India में जितना भी synthetic textile है, whether it is cotton, jute, fiber, all are running in diesel, the machines. And diesel क्या है? Petroleum के अंदर ही है. And then I said fertilizer. Don't you think India का agriculture अगर वो तो टाइम पूछ रहा भाई, और दूसरा भाई साहब का स्टाइल दिखाने का बहुत अच्छा है. Why it is so important? You can ask me 5 o'clock, more 15 minutes you have to pay me. If you want to watch the time, there what is going on, 4:57. Right on the next topic. Now he is scratching his head, putting the button on. हाँ ये देखिए. Terminology में तुम लोग ने तो PhD कर लिया यार. Okay, next one. You write, no need to write, come to page number 119. I can go a little bit faster. 15 minutes mein. Okay, occurrence I am moving. Everyone is having a volume? Yes. Please bring your volume every lectures. Easy for me to go ahead. Most of the petroleum in India. Yeah, only one volume. Hey boy, if they have an extra volume, get it from them. That's easy. Good boy. Good boy. This is the way. Only textbook, not the textbook. No. टेंशन में तो उससे क्या रहेगा एक्स्ट्रा शेयर in most of the petrol underline anticlines and fault track. ये rocks का anticline है जो कट सेक्शन में है, folding anticlines and domes ये भी rock structure ही है, oil bearing layer underline porous limestone and sandstone. So what are these two types of rocks, sandstone and limestone? Sedimentary, उधर ही लिखो sedimentary rocks. कभी मार्बल के नीचे ऑयल नहीं मिलेगा. ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, देखो यही मैं पूछ रहा था आपसे, राइजिंग और सिंकिंग बाय अंडरलाइन, ये रीजन लिखने का एग्जाम में. इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर, लुक आई विल एक्सप्लेन हियर. I say this is that rock structure. Understand, guys? So I say this is one impervious. You know what is impervious? Which is very hard. And this is pervious, which is little bit soft. So here the decomposition, whatever you have, they have come out in the form of which oil? Crude oil. They cannot come up क्योंकि ये कौन सा layer है? Impervious. And good thing, there is one more impervious layer below this structure. So neither it will sink. Understand? अभी समझ में आ रहा? So when the drilling process starts, there are concentric pipes are put. So इधर तक पाइप आएगा, but इसके आगे पाइप नहीं जा सकता. So drilling starts. Understand? So drilling will come. Here they will stop.
ये स्टॉप हो गया, बट वाटर डस्ट सब जाएगा. So there is one more pipe coming in इसके अंदर से. Now you understood why did I say concentric pipe? अभी ये वो लेयर तक गया जहाँ तक वो टच होता है. Then one more pipe. Now the sucking part will start. This is why I'm saying it is a highly deadly topic to understand. टोटल 3 पाइप. हाँ, एक के ऊपर एक के ऊपर. वो आप मराइन इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको बताते हैं कौन सा. हाँ, ओएनजीसी का है ना वीडियो. हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट वीक निकल. ठीक है, चलो. लास्ट 10 मिनट्स. हाँ, ओके. After my second lecture finishing. Wait. Right on, not right on. Go ahead. Oil bearing layer is ये समझ में आया? Petroleum is also found, underline, fault traps. यही मैंने explain किया, porous and non-porous. Underline, gas being lighter above the oil. Which gas they are talking? Which gas? You write natural gas. सही है. देखो मुंबई हाई, उधर ही कंपनी का नाम लिख दो, ONGC. एवरीवन राइट वॉल्यूम. ONGC का फुल फॉर्म साइड में लिखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन. ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन. नेक्स्ट गुजरात. इट्स ओके. असम. असम के बाद इधर डिग बॉय. हाँ नीचे आ जाओ. देखो गुजरात इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑयल फील्ड नेम इज अंकलेश्वर. यू नो व्हाट इज ऑयल फील्ड एंड ऑयल रिफाइनरी? ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल निकालते हैं. इन ऑयल रिफाइनरी में क्या करेंगे? क्रूड ऑयल को हम लोग पेट्रोलियम डीजल में कन्वर्ट करेंगे. इज इट ओके? इज ONGC ऑयल फील्ड और ऑयल रिफाइनरी? ऑयल फील्ड. देखो उसमें तीन पार्ट है. यू नो व्हाट इज दिस बसीन एंड एलिबेट और एल्बेट? Where is this basin in Mumbai? Mumbai was earlier 7 group of islands, and this Prince Charles and that lady Victor, not a sand, reclaimed the land. So now we are having that place also, basin. Then go to Assam, circle that word dig boy, और उसको arrow नीचे लेकर आओ, and write down India's first oil refinery. India's first oil refinery 1937 में ये start हुआ था. अभी नहीं बंद है. But है थोड़ा थोड़ा. India's first oil refinery, Big Boy. देखो how smart is that word? Big boy. Boy is only digging. Big Boy. That is an Assam name or what is it? Now underline that also. Nahar Katia. Nahar Katia. Which Katia? Nahar Katia. Moran, Hugurajan होने चाहिए. Then come to natural gas. I'm going a bit faster. Try to finish. In between, what is happening? I'm ready. वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों? Because of his fine haircut. तो क्या बोलते हैं? हम लोग भी हमारे स्कूल डेज में करते थे. क्या बोलते हैं उसको? नहीं. टाली बोलते हैं. टपली. Very good. He knows it. टपली. तो जो भी टपली मारेगा ना, wait, boy, I will come to give him the biggest one. Now you turn normal bed. होने तो दे. All the three, whoever is sitting behind will get it. Immaterial of who has beaten. है ना? You relax. अभी देखते हैं. चलो natural gas. ओए आगे. Important clean energy. Underline that. With or without petroleum. Sometimes when we refine petroleum, that time also we get it. Without refining also we'll get it. Next, used as a major source लिखना. Major source. Industrial raw material. Only underline ना. Underline petrochemical. उधर लिखना PCL. Actually ये कंपनी का नाम ही है. Petrochemical Limited. PCL. Synthetic rubber, चप्पल्स बनाना, और ये फार्मास्यूटिकल में जाता है, कुछ कॉस्मेटिक्स में जाता है, and it is a very company, big company, petrochemicals. Next, considered as underline fuel for the present century. उसको सर्कल करो और उधर लिखो GR. एग्जाम में आता है, why it is known as a fuel of present century. What is the question? No, it is there. If you want, I'll give you a separate. देखो. No, you said circle it next. GR, give reason. देखो उधर लिखा है लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पहला, इजी ट्रांसपोर्ट, ये दो मेन चलो.
Underline. India not self-sufficient. What is not self-sufficient? They need to We import on a large scale. ठीक है. Then reserves and utilization. Boy, you read reserves and utilization. We will dig you, dig boy. You know, he's digging something on the Reserves and utilization. Large reserves of natural gas have been discovered in Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Assam, and Andaman and Nicobar Islands. Put all this into bracket, huh? Andhra Pradesh, Along- Gujarat, Andaman, Nicobar Islands. Go ahead. Along the west coast, Mumbai High and Gulf of Cambay. That is in Gujarat and Kutch. Cambay. And reading now. Read. A huge natural gas field has recently been discovered in Krishna Godavari Basin in private sector. Underline that. Huge natural gas. But what is the bad thing? It is in which sector? Private sector. वरना generally सब कुछ कौन सा sector में था इंडिया में? Public sector में रहता है. Oil, natural gas. Go ahead. Production. The 1700 kilometer long Hazira Vijaypur. ये mark करना है. It is HVJ. Hazira Vijaypur and Jagdishpur. Everyone please write it in the notebook. Those who do not have the volume, write up. HVJ. It is coming from Madhya Pradesh and I think Maharashtra में आता है. 3 states it covers. Look at India का longest pipeline HVJ. Come on everyone repeat. HVJ. Full form ideas. Oh, Hazira Vijaypur Jagdishpur. बस इंडिया का क्या है? Longest Gas pipeline. Longest pipeline in India. Go ahead. Cross country gas pipeline links Mumbai High with Bison. Basin Island. Basin. It's okay. Hey, bhai. It supplies gas to the fertilizers, power industry. ये bracket में डाल दो. They might ask you, what does this HVJ pipeline do? In western and northern India. Hmm. The artery has provided Artery. What is artery? उधर लिखो. High value. Artery is associated with human heart. Correct? हाँ, उतना important है. इसलिए उसको artery बोला है. to India's gas production. Okay. The power and fertilizer industries are the key users of natural gas. I put all this into. What is key users there? Main users. Go ahead. Use of compressed natural gas (CNG) for vehicles to replace liquid fuel is gaining. Only underline only that word CNG. Dekho, now we have started EVs, but before EVs, why CNG is so popular than petrol and diesel? Less pollution, cheaper. What else? Environmental friendly. Mileage कम है. सबसे ज़्यादा mileage पेट्रोल का है. सबसे ज़्यादा. We are the only person in our hometown. When I was I was flying to Singapore. My lovely brother took a car of his own. Early morning, we got into a petrol station. Neither we observed, nor that fellow who filled the petrol, he observed. गाड़ी पेट्रोल का था, भाई साहब ने पूरा टंकी भरा डीजल में. खराब क्या हुआ? आगे का कॉम्पिटिटर सुन. The vehicle just moved out of the petrol station, stopped. And मेरा hardly 1 घंटा था बोर्डिंग के लिए. जो मैंने उसको बोला रहेगा मैं क्या बोल सकता है ना? हिंदी में मस्त बोला. नहीं, then finally one of the fellow took me as a lift and deposited in the airport, and I caught the flight, and before I could reach Singapore, my cousin, क्या भाई पेट्रोल के गाड़ी में डीजल कैसे भरा? मतलब मैं थोड़ी भरा, जो पेट्रोल वाला था उसने भरा. ये भाई साहब ने बोला कि टैंकी फुल करो, एंड वो नींद में आके चला डीजल उठा के अंदर डालेगा, हमको क्या मालूम. एंड वी वर सिटिंग नाइसली AC ऑन गुड, एंड इट इज. फिर मैं उधर से पूछा भाई साहब वो गाड़ी आके कैसे बढ़ा? कुछ नहीं, मैकेनिक आया पूरा इंजन खोलना पड़ा. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन. डीजल का इंजन गाड़ी में हम लोग ने पेट्रोल भरेगा तो ऑपोजिट. मतलब पेट्रोल का छोड़, मेरा अगर फ्लाइट मिस होता ना, देन आई कुड हैव मेड 1 to 2 or 2 to 4 देयर ओनली. सो वी विल नेवर फॉरगेट. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गया ना, नॉट सिट इनसाइड द कार, बोलेगा क्या भर रहा है? डीजल. फिर भी दिखा मुझे. डोंट वांट एनी टेंशन. So now you are fighting for this average na. Diesel engine will give you an average, but uska jo long run capacity kam hai. CNG can also give you average, but definitely petrol has the efficiency like anything.
But why do we move away from petrol engines? Petrol is costly. Simple. Correct. Even petrol also, I fill to my vehicle normally a high fuel petrol. अगर हाँ whatever in different का HP का power रहता है, IP का speed petrol रहता है और दूसरा का तो IP 965 रहता है. हाँ ये अगर 107 है 103 है that will be 111 9 rupees का difference रहता है. But the good thing engine will be smooth and the average the way I want to ride it or drive it it becomes easy. बट हार्डली अगर आप 7-8 रुपए का देखेगा देन देखो पेट्रोल में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. पहले मुझे याद है कैस्ट्रॉल का एक पावर बूस्टर आता था, पावर बूस्टर. हाँ कैस्ट्रॉल पावर बूस्टर. सो व्हाई आई एम सेइंग इट टुडे इज नॉट अ जमाना ऑफ ऑर्डिनरी. द हाईएस्ट फ्यूल रिक्वायरमेंट इज बाय एरोप्लेन्स. ठीक है, जब भी आप बोर्डिंग करता है पहला फ्यूलिंग पहला होता है. एंड इफ यू हैव सीन दैट 9/11 इंसिडेंट है ना, every plane either domestic or international has the capacity of going and coming back उतना फ्यूल उसमें भरते हैं. अगर एक एग्जांपल डोमेस्टिक मुंबई से मुझे असम जाना है तो मुंबई टू असम कितना होगा उनको एवरेज मालूम है, दे फिल दैट. बट अगर इफ इट इज ट्रबल और एनीथिंग द फ्लाइट हैज टू कम बैक दे फिल डबल. तो दिस इज हाउ दैट स्मार्ट टेररिस्ट यूज्ड इट एज एटम बॉम्ब. क्योंकि उतना अगर फ्यूल को लेके जाके आप बिल्डिंग में डैश करेगा क्या होगा, it itself becomes a atom bomb. But there are many other. अभी एक नया OTT प्लेटफॉर्म में आ रहा है, the 2611. I think Americans have proved 2 फ्लाइट ठोका, that is okay. ऐसा नहीं कि बिल्डिंग, but that building was collapsing exactly. तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा कंपनी है जो बड़ा बिल्डिंग को डायनामिट रख के उड़ाता है. तो कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि बेसमेंट में these terrorists might have already planted a bomb. बिल्डिंग अगर उसने 73rd फ्लोर में ठोका है ना, इट इज 88 अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, हाउ बोथ द बिल्डिंग्स आर सिटिंग वेरी इजीली डाउन. इट्स ऑल हाई लेवल. यू वॉच दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म, यू लव इट. इट्स न्यूली मेड एंड उन्होंने उसका सारा सीक्रेट बाहर बता दिया. एंड जॉर्ज बुश इज सिटिंग इन अ स्मॉल नर्सरी स्कूल, वो भी एंड कोई आके उसका कान ना बोलता, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, फिर तुरंत उठता है. एयरफोर्स 1 and he is in the air. Nobody can see where is Mr. President till the situation doesn't come. That is the good thing about Air Force 1. So these are the dangerous things. And it was no flight. हाँ, 4 फ्लाइट उन लोगों ने ठोका, 4. No flight. नहीं, no flight zone नहीं था. It was normal, but they have planned more than 6 months before. And that main terrorist was Mohammed bin Atta. He was a person with 8 people they have gone. कोई पैसेंजर उठ के चिल्लाने का नहीं करके they slit one of the passengers and put it in front. And your own passenger is dying with a and सबको बोला आप अपना फोन ऑन करो, अपने रिलेटिव से बात करो. So many people stored the messages, many people recorded and they called their family. पता नहीं क्या होने वाला है, but we will not come back because passengers were confused. ये लोग कहाँ लेके जा रहा है? And until that time, that first plane and the second plane. I still remember that was the time initial days of teaching. तो मुझे पहला मैसेज आया कि लड़कियों को जल्दी छोड़ो, कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ है. तो टेररिस्ट अटैक, हम तो चेंबूर में थे, मुंबई में रहता था. नहीं सर, इधर नहीं, अमेरिका में. अमेरिका में ऐसा बोला नहीं पीयू को, अबे अमेरिका नहीं सर, वो बहुत गड़बड़ी प्लान भी हो सकता है. अभी और पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या नाम है. मैंने बॉस मुझे कुछ नहीं सर, you go home, you watch the news in Kanpur. By the time I went in, 15-20 minutes, that building was live going on. वो तो जाने तो अमेरिका है, सारा बहुत पैसा रखा है. इंडिया का जो 29/11 अटैक वो भी मैं लाइव 26/11. That was also I was watching. 3 दिन में सोया भी नहीं, पूरा रात भर बैठ के देखने का. जब लास्ट बॉडी ऐसा फट के गिरा वो ताज होटल से, that was the time they said mission accomplished. And how they were coming from a chopper, how they were landing in 5-star hotel, everything was given to Pakistani films. And उन लोगों ने होटल के रूम से पकड़ के सबके सर में बुलेट डाला, एक्स्ट्रा बुलेट उसके सर में डाला जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था. You have watched that movie ना 26/11? My brother was inside that VT railway station. भाई साहब किसी को बच के एक दिन ही आया. But then I went into the third day. पूरा railway station में bullets का मार. Kasapa in that other fellow. Ismail. चलो.
So what I am going to plan, I think my lectures will be coming little bit extra next week. So ये चैप्टर के बाद 2 चैप्टर है अपने पास, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक ट्रांसपोर्ट है, लाइफ लाइन्स. इकोनॉमिक्स तो पूरा हो गया ना. So once that is to be picked up, I think the whole crowd will come. We will do side by side map marking. 4 मार्क का ही है. I will let you know the chapters. 3 मार्क ज्योग्राफी का रहेगा, 1 मार्क आपका हिस्ट्री का. Okay? चलो, thank you. I'll see you next week. Next class. The next lecture also. 9 only. हाँ. Are you sure? Yes. That's what Oh, it yeah. should be. Then I